Okay, so let's start where we left. Okay, so we were talking about previously about the sales communication content. Now we'll talk about adding value to content, how you can add value to content, make it unique and make it good. So first of all, you need to make sure whatever you're writing, your content need to be very much distinctive. It should stand out among all the content. Here we'll take a common example. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कल या परसों आई थिंक जल्जिला आया था, तो अगर मैं आपको कहूँ कि वो न्यूज़ जो है बिल्कुल सेम है, अब बहुत सारे हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर एक न्यूज़ चैनल जो है वो कंटेंट डालता है आज, मतलब कल ये सब कुछ हुआ और वो इसके बारे में कब बात करता है, आज वो पोस्ट करता है अपना सोशल मीडिया के ऊपर, आज ही वो न्यूज़ चलाता है। आपको क्या लगेगा, लोग क्या समझेंगे कि इसका क्या मतलब है कि इसके पास टीम अच्छी नहीं है या इसको इसके कंटेंट की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कल जितनी भी न्यूज़ थी वो सारे देख चुके हैं, तो अब उसके कंटेंट का क्या है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ही पोस्टेड लेट। सेकेंडली, अगर ये होता है कि आप कंटेंट जो पोस्ट करते हो उसी टाइम अगर आप न्यूज़ खोलोगे, हर न्यूज़ पे एक जैसी चल रही होगी, न्यूज़ चल रही होगी, लेकिन फिर भी उनकी न्यूज़ सेम नहीं होती, it is different. They play with the words, they change the wordings, they change the perspective. बात सब कम्युनिकेट सेम ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप भी आईफोन की जो है कोई आर्टिकल लिखते हो तो बात तो आप भी वही कर रहे हो जो कोई और लोगों ने भी लिखी होगी गूगल पे, क्योंकि आप सिर्फ एक बंदे तो हो नहीं, दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी कंट्रीज हैं, कोई भी कहीं से किसी भी किस्म का आर्टिकल लिख सकता है। और डेफिनेटली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू आई है या डिफरेंट न्यूज के थ्रू आई है, तो हर चीज हर किसी के पास अवेलेबल है। It's about playing with the language, like how you're going to communicate it, when you're going to communicate it, and how you're going to communicate it. ठीक है? So second thing is research is the key. You have to do good research. If you're not doing a good research, you're going to have fluffs in your content. You're not going to have enough facts. You might think that some of these things that I'm stated are facts, might you end up with the things which are not authentic. Or you might using some of the websites which are not authentic in itself. For example, you can say Wikipedia में हम सबको पता है कि वो reliable source नहीं है, और उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लोग जो हैं HTML या आपको पता होगा उसके थ्रू, डेटा साइंस में जितनी भी लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, सो हम बेसिकली विकीपीडिया पे रिलाई नहीं करते। ठीक है, तो उसकी रिसर्च आपके कोई काम नहीं आती, आपको डिफरेंट ही देखनी पड़ती हैं साइट्स। Then there comes the next point, which is like movement of content. We have to move the content from simple to complex. That's the same thing that I've stated very much in this lesson is you cannot state the ending in the start. You cannot state everything that is more complex. First, you have to define what you're talking. Then you have to go into detail. Then you have to mention the ending, and that's the end to the content. Then again, use different headings and pointers. Now in articles, we do not add pointers. We may add headings, but headings on website, and we might add headings on post if you're posting on Instagram. And then in the description, you can add the content. Then already explained, you can use the jargons. Moving to the next slide is how to hone your skills and how to write a good content. So first of all, you have to read good, like you have to do good research. You have to absorb that research and then you have to write. अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं इन लाइक लोअर क्लासेस, हम क्या करते थे, जैसे कोई पेपर आता था, कोई भी कोई भी कॉम्प्रीहेंशन होती थी, तो हमने बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़े और उस एक क्वेश्चन को लेके हम कॉम्प्रीहेंशन से जो है आंसर ढूंढना शुरू कर दिया हमने। जहां हमें पहला आंसर मिला हमने वो चीज लिख ली। जब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया जिसमें हमने ओपिनियंस देने थे जो कि हमारे स्टोरी के बेस थे, वहां हम फंस जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी नहीं, हमने आंसर्स दे दिए, और क्या पता जो आंसर आपने सिलेक्ट किया वो सही हो ही ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करो, उसको एब्जॉर्ब करो, फिर एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच के साथ अपनी राइटिंग को लिखो। ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब ऑन किया है, वो जो बोली जा रहा है आप लिखी जा रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह आप अपने कंटेंट को एक फॉर्मेट नहीं दे सकोगे। जब आप सब पढ़ लोगे, ऐसा ही होता है ना स्टोरी में,
जब आप कोई स्टोरी भी लिख रहे हो, आपको कंटेंट भी लिख रहे हो, तो आप शुरू से हर चीज सोच के लिखते हो। ऐसा थोड़ी करते हो आधा सोचा, अच्छा शुरू में ये कर देते हैं, बीच में ये कर देते हैं, फिर आपकी एंडिंग ही एब्सर्ड हो जाती है। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोई कंटेंट लिखें तो पहले आप उसको रिसर्च अच्छा करें, उसको एब्जॉर्ब करें, सारे मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लें या याद कर लें, और उसके बाद जो है उसको लिखें। देन व्हाट टू रीड, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि अच्छा हमने रिसर्च करनी है तो रिसर्च करें क्या। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लॉ पे आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो आप बुक ऑन कॉमन एरर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं ऑनलाइन उससे रिलेटेड। अगर आप किसी स्पेसिफिक लॉ पे, जैसे क्रिमिनल लॉ पे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस मैगजीन के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हो, तो आप बिजनेस मैगजीन सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर देख सकते हो उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो किस तरह लिखते हैं, क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल्स या स्टोरीज लिख रहे हो, तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप आर्टिकल स्टोरी लिख रहे हो लेकिन आप बिजनेस मैगजीन का कंटेंट चेक करना शुरू कर दो, क्योंकि उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, उसकी टोन डिफरेंट है, उसकी स्टाइल डिफरेंट है। बिजनेस मैगजीन में डिपेंड करता है आप किस किस्म का कंटेंट लिख रहे हो। अगर वो कोई, जिस अगर आप में से किसी ने स्मैश पढ़ा हो, तो उसमें डिफरेंट कंटेंट्स आते हैं, जैसे उसमें जोक्स वाला पार्ट भी आता है, उसमें सार्केज्म वाली स्टोरीज भी आती हैं, तो उनका टोन और स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल्स एंड स्टोरीज वी आर गोइंग टू राइट विच आर प्रोफेशनल। फिर अगर आप वेबसाइट की कंटेंट के लिए कुछ लिख रहे हो, तो डिफरेंट वेबसाइट चेक करो, उनका कंटेंट किस तरह लिखा हुआ है, उनका इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा हुआ है, उनकी प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही है उसकी जो है इंफॉर्मेशन कैसे स्टेटेड है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू राइट क्रिएटिंग किलर कंटेंट, ठीक है, हाउ टू राइट या फिर हाउ टू क्रिएट अ किलर कंटेंट। तो इसमें ये होता है कि दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज परसुएसिव, it persuade the client to buy a relevant product or to take the relevant service from the company you're working for. It needs to be informative, it needs to be provoking, and it needs to be engaging. Same meaning that you have to basically persuade. You have to make sure that the client takes an action after reading your article or after reading your content. Then there needs to be a break of content. There needs to be different paragraph. It's not like you're writing in a flow. Any content that is written in flow is boring. Give a chance to the reader to take oxygen between your content, right? So we need space, we need breaks in between the content. So there needs to be paragraphs. Then the content needs to be insightful. Again, it needs to be informative. It should add value to your information. For example, if I already read about the launch of iPhone 14 Pro, I don't want to know that it is launching. I just want to know what kind of specs it is or how much does it cost. So it should be a value add towards the readers. It can be opinionated. I've already told you what kind of content you can include as in your opinions. Then it needs to be very much well researched. Now, I guess third last or second last slide on how to optimize your skills. You have to work within your limits. Like whatever your boss has stated, you have to work on that. You can give recommendations, depends on whether he appreciates it or not. You have to use the right words at the right place. Like I've told you before, you cannot use BWT in a professional content. You can use BWT in a blog content, which you are generally posting it for yourself or readers to enjoy that content. Then you can edit your text again and again, looking for if there are any kind of problems in the, or there are any grammatical mistakes, just to remove them, because you know the first impression is the last impression. You might not know how many people are reading this 10th of your article for the first time. Then you need to understand the subject theme of the business. For example, if the theme of the business is just to talk about on the single aspect of launching of some products, not defining the feedbacks, then you cannot change the theme of the business yourself. That is, you know, similar to the first point, which is work within your limits. These are some of the types of the content writing. These are not limited to just these forms. There are a lot of, you can search it afterwards. Yes, Laiba, I'm hosting graphic designing sessions, graphic basic only, not advanced. Miss Kiran is teaching advanced sessions. Did you not take the first session? We're done with the first session on Thursday. अच्छा जी, so these are some of the types of the content writing. ये मैंने कुछ लिख दी हैं, आप इनको बाद में गूगल करके इजीली सर्च कर सकते हो. ये सिर्फ लिस्टेड डाउन है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से दो चीजें जो है हम पढ़ेंगे, इसमें स्पेशलाइज करेंगे क्योंकि मार्केट में उनकी ही ज्यादा वैल्यू है. बाकी आप अगर करना चाहो
तो वो आप कहीं से भी जो है इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ब्रीफली। बट ज्यादा डिमांड मार्केट में सिर्फ ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग की ही है, जो वेबसाइट पे बेसिकली कंटेंट हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। सो इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल कोट दैट आई गिव इट टू माय स्टूडेंट्स सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट lesson, which is like, take complete ownership of your project. You are not writers but communicators. So it's a very strong quote. It has a deep meaning in it, that you are not just writers. What you're writing, you're communicating it to the people. इसमें एक एग्जांपल आती है, जैसे कोई भी एक इंसिडेंट हुआ होता है और डिफरेंट न्यूज चैनल जो है उसको अपने पर्सपेक्टिव से इसको बता रहे होते हैं। सो अगर वो अपने पर्सपेक्टिव में इसमें चीजें ऐड करते हैं तो बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है हमारे माइंड्स के अंदर डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता कि कौन सा न्यूज चैनल या कौन सी न्यूज जो है वो सच बोल रही है। ठीक है, सो इट्स द कोट दैट यू आर नॉट जस्ट राइटर्स, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग नीड्स टू बी वेरी मच ट्रू, with the thought that people are going to read it and keep it in mind for the future. That was it with the lesson 1. We're going to talk about article writing in detail. I'm going to show you examples. There is no as such homework, just a little of thing you, if you want to do, is just search different kind of content writings. If you want to do that, that's totally up to you. So are there any questions for this session? Okay, seeing none, thank you so much everyone for being here for session 1. I hope you all will be there for session 2. Thank you so much for your time, and Allah Hafiz.